Hello, my dear students. Welcome to today's session. How are you all doing? I hope you're all doing great. Alright, so let's start today's class. And what are we learning today? We are learning about plants. And what is the name of today's chapter? Our Green World. So if you look around, there are so many plants, trees, and they are so beautiful. And everywhere it seems as if our world is green. And that is why the name of the chapter is Our Green World. Shall we start? Are you excited? Alright. So what are we learning in this chapter today? Types of plants. प्लांट्स कितने तरह के होते हैं एंड हाउ डू प्लांट्स ग्रो. अब हम छोटे से प्लांट को बड़ा होते देखते हैं बट वो कैसे बड़े होते हैं. लेट्स लर्न टुडे. आज हम देखेंगे इस चैप्टर में कि प्लांट्स ग्रो कैसे होते हैं और कौन से डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं. सो शैल वी स्टार्ट. ऑलराइट. वी सी मेनी प्लांट्स अराउंड अस. जब हम आसपास देखते हैं तो इतने सारे प्लांट्स हैं. दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स. प्लांट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं. क्यों? क्योंकि हमें फूड देते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सो मेनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, इतनी ठंडी ठंडी हवा देते हैं. सो प्लांट्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम. आप अपनी फ्रेंड्स की केयर करते हो? इसी तरह जब प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स हैं तो हमें उनकी भी केयर करनी चाहिए. दे मेक आवर वर्ल्ड कलरफुल. हैव यू सीन कि जब हम ट्रीज देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, ट्री की लीव्स ग्रीन कलर की, फ्लावर्स येलो, रेड, पर्पल, सो मेनी डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर. वाइट, मरून, ऑरेंज एंड इट लुक्स सो कलरफुल. आपके हाउस में भी जो आप गार्डन में या पॉट में छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे या फ्रूट्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, कितने कलरफुल एंड ब्यूटिफुल दिखते हैं ना. सिमिलरली दे मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटिफुल एंड कलरफुल. सो लेट अस नो मोर अबाउट प्लांट्स. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लांट्स? अब जब हम आसपास देखते हैं, क्या सारे प्लांट्स एक जैसे हैं? सब एक जैसे दिखते हैं? नहीं ना. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. एंड हाउ डू वी नो दैट विच प्लांट इज विच? लेट अस फाइंड आउट. प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा छोटी हाइट का है, कोई लंबी हाइट का है, कोई थोड़े से फैट है, कोई बहुत थिन है. ऐसे आप लोग डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के हैं ना. आपकी मम्मा टॉल है, पापा टॉल है, आप स्मॉल हो, आपके छोटा भाई बहन और स्मॉल है, और या फिर आपका बड़ा भाई बहन आपसे बिग है. इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो भी डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं. कोई बहुत टॉल तो कोई बहुत वाइड एंड ब्रॉड, या फिर कोई बहुत स्मॉल, बहुत छोटू सा. So plants grow in different shapes and sizes. Some plants are big and some are small. See, can you see them? So this is a coconut tree and see how tall is it. Have you ever seen a coconut tree? Think? Yeah. So coconut trees grow so tall. And then there is a tree which is called oak tree. It is not very tall, it is big, but it is so wide. इतना उसकी leaves वहां से लेके वहां तक फैली हुई होती हैं. Then there are some plants which are of short height, like a rose plant and sunflower. Now let's see, what are these big plants called? Big plants are called trees. When you go to a garden, when you go to a park, have you seen big plants? Big plants, and these are called trees.
trees. How do trees, have you ever drawn a tree in your drawing notebook? Okay, so let's draw it together. So how will we draw a tree? A trunk like this, two curved C, and let's make big leaves. What is this? This is a tree, and this is very big and tall plant which is called a tree. They are tall and strong. This part of the tree, this is so tall and this is so strong. They can grow to great heights. जो ट्रीज होते हैं वो बहुत टॉल हो सकते हैं, जैसे कोकोनट ट्री विच इज वेरी टॉल. एंड ट्रीज एक्चुअली व्हाट आर they are plants which are very big. You know, when we go to mountains, we see such tall trees like this. It's a triangle shape and a tall tree, and they are very strong. Alright, so let's name few trees. Mango tree, pine tree, neem tree. Do you know any more trees? Banana tree, gulmohar tree, banyan tree. Very good. You're awesome. Great. So now today you're going to tell the name of the trees, any 5 trees, to your parents. So let's repeat. Mango tree, pine tree, neem tree, banana tree, banyan tree, and so you will find out more trees. Coconut tree. All right. Now some plants are small. They are not as tall as trees. Some plants are small and they grow by climbing up other objects. You know what happens sometimes? There are few plants which are so weak that they need some support to grow. उनको कोई ना कोई स्टेक चाहिए होती है या कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है जिससे वो उनके सपोर्ट से ग्रो कर सके. और ऐसे प्लांट्स को पता है क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स और twiners. Climbers or twiners. Do you know how do we climb? We climb with the help of a stair, right? Similarly, there are few plants which are so weak that they cannot grow on its own and they need some type of support to grow. So let's draw a climber in our notebooks. Are we ready? Okay. So first let us draw a stick. This stick will help the plant to climb. Now, how will a plant climb from here? It will grow from here, then it will climb like this, and it will climb to the top. And then it will, we will put some more support and it will keep on climbing. And how beautiful does it look? See? And there are so many leaves around it. And it looks so beautiful. What are they called? Climbers or twiners. Can you see the picture? There is a support. And which plant is this? This is a bean plant. Have you ever eaten beans?
They are very healthy. And mama make bean vegetable. So bean is a climber which climbs up with the help of a stick, right? With the help of a support. Similarly, grapevine, the grape plant, it cannot grow on its own. It is very weak. So we put a support and then the grape plant climbs up that support. And can you see the bunch of the grapes? They look so juicy and tasty. Yes, I love grapes. Then money plant. Money plant is a plant जो इंडिया के ऑलमोस्ट हर हाउस में मिलता है. मेरे घर में 3 मनी प्लांट्स हैं एंड मैंने उसके अंदर एक स्टिक लगाई है जिससे वो मनी प्लांट ऊपर की तरफ क्लाइंब करता है. एंड व्हाट इज इट कॉल्ड? क्लाइंबर. So now today we have learnt about 3 types of climbers, 3 climber plants: beans, grapevine and money plant. So tell your parents about it today and make them surprised that wow, you know so much. So climbers or twiners, they need support to grow. Very good. And why do they need support? Because climbers cannot grow straight. They cannot grow straight on their own. So till now we have done 2 types of plants. Trees which grow very tall on their own and they are very strong. Second is climber which are not very strong, they are weak. They cannot grow on their own straight, so they need support to grow. And they are called climbers or twiners. Some plants grow straight, exactly straight. And what are those plants called? One is the bamboo tree. The bamboos, they grow very tall and straight. They are very strong. And the other is pine tree which grows straight and tall. Another is coconut tree which grows very tall and straight. You know what? Bamboo trees grow so tall that they can grow up till 1 meter in one day. Just imagine. Some plants grow straight but not very tall. They grow straight to a certain height. कुछ देर तक वो सीधा ग्रो करते हैं और उसके बाद उनकी लीव्स इतनी वाइड एंड ब्रॉड हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल ओक ट्री, गुलमोहर ट्री एंड बैनियन ट्री. सो कुछ ट्रीज होते हैं जो एकदम स्ट्रेट ग्रो करते हैं और कुछ ट्रीज होते हैं जो पहले स्ट्रेट ग्रो करते हैं और उसके बाद बहुत वाइड उनकी लीव्स हो जाती हैं. सो banyan tree, gulmohar tree and oak tree. So what are the 3 plants, 3 trees which grow very tall and straight? Pine tree, coconut tree and bamboo. Similarly, which trees grow straight to a certain height? कुछ हाइट तक स्ट्रेट जाते हैं फिर इतने ब्रॉड एंड वाइड हो जाते हैं. ओक ट्री, गुलमोहर ट्री एंड banyan tree. Alright, so let's move forward and see what are the next type of plants. Some plants grow along the ground. What does this mean? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं और वो किसी सपोर्ट से भी ऊपर नहीं जा पाते. तो वो कहां ग्रो करेंगे? वो ग्राउंड पर ही ग्रो करेंगे. सो लेट्स ड्रॉ दिस काइंड ऑफ प्लांट. दिस इज अ ग्राउंड एंड दिस काइंड ऑफ प्लांट ग्रोज on the ground only. They creep on the ground. वो ground पर रेंगते हैं.
And when they creep on the ground, they are called creepers. What are they called? Creepers. ऐसे वाले जो प्लांट्स होते हैं, इनके फ्रूट्स ज्यादातर बहुत हैवी होते हैं, जिनको लेकर ये ऊपर ग्रो ही नहीं कर पाते. तो कितने हैवी फ्रूट्स होते हैं? जैसे वाटरमेलन. सो वाटरमेलन का जो प्लांट होता है वो ग्राउंड पर ही ग्रो करता है, वो ऊपर नहीं जाता. एंड व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स अ क्रीपर. Pumpkin is such a big fruit, and the pumpkin plant is also a creeper. जो pumpkin का plant होता है वो भी इतना weak होता है कि वो किसी support से भी ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए वो ground पर ही creep करता है और वो एक creeper होता है. And similarly sweet potato. What is sweet potato? Shakarkandi. Have you eaten it? Yes. So in winters, shakarkandi is, it is so mouth watering. इतना अच्छी लगती है खाने में. So it is also a creeper. Now, which 3 plants have we done in creepers? Watermelon, pumpkin, and sweet potato. So what are the 3 types of plants that we have done today? Trees, climbers, and creepers. Wow, that's awesome. You are repeating with me and you are great. Now, I am wondering, how do plants grow? हमने ये तो समझ लिया कि कुछ प्लांट्स इतने टॉल हो जाते हैं, कुछ सपोर्ट से ग्रो हो जाते हैं, कुछ ग्राउंड पर ग्रो हो जाते हैं, बट वो ग्रो होते कैसे हैं? हाउ डू दे एक्चुअली ग्रो? हाउ डू प्लांट्स ग्रो? सो लेट्स लर्न अबाउट इट. मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. छोटा सा दाना होता है, सीड होता है, उसी सीड से प्लांट ग्रो होते हैं. So plants grow from seeds. There are different kinds of seeds. जिस तरीके से different kinds of plants होते हैं, तो different kind of plants के different kind of seeds होते हैं. एक ही seed से हर तरीके का प्लांट नहीं आ सकता. मैंगो ट्री का अलग सीड है, बैनियन ट्री का अलग सीड है, इसी तरीके से पंपकिन का अलग सीड, वाटरमेलन का अलग सीड. So there are different kinds of seeds. When we plant a seed in the soil, अब हमारे पास मिट्टी है, उस मिट्टी में हमने एक छोटा सा सीड सो कर दिया, एक छोटा सा सीड उसके अंदर डाल दिया, प्लांट कर दिया, और उस सीड को बहुत सारी फ्रेश एयर मिली, हमने उसके अंदर वाटर डाला, ऊपर से उसके ऊपर सनलाइट आई, तो क्या होता है? कुछ दिनों बाद एक छोटा सा बेबी प्लांट आ जाता है, एक छोटा सा बेबी प्लांट आ जाता है. एंड व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड अ सीडलिंग. इट इज कॉल्ड अ सीडलिंग. तो पहले हमने मिट्टी में सीड को सो किया, उस सीड को जब हमने सॉइल में सो किया फ्रेश एयर में, तो फ्रेश एयर के साथ, सनलाइट के साथ, और जो हमने उसके ऊपर वाटर डाला उसके साथ एक छोटा सा पौधा बाहर आया, छोटा सा प्लांट बाहर आया, जिसको हमने बोला सीडलिंग. सीडलिंग. एंड द बेबी प्लांट कम्स आउट फ्रॉम द सीड एंड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. तो पहले एक सीडलिंग आया, सीडलिंग में से एक छोटा सा कैन यू सी दिस ग्रीन प्लांट, बहुत ही स्मॉल, इट इज अ बेबी प्लांट. जैसे जब आप छोटे थे, मम्मा के बेबी थे छोटे से, अब तो आप थोड़े बिग हो गए हो, पर जब छोटे से बेबी थे, ऐसे ही सीड में से एक छोटा सा बेबी प्लांट आया और धीरे धीरे वो बड़ा होता गया और एक फुल प्लांट बन गया विद द हेल्प ऑफ soil, water, sunlight and air.
Okay, so please repeat after me. How does a seed become a plant? It requires soil, sunlight, water and air. Very good. You all are so intelligent. Now let's scratch our brain a little bit and revise what we have done till now. You have to draw a line to connect all the things a plant needs to survive and grow. तो आपको वो सब चीजों को कनेक्ट करना है, एक दूसरे से मैच करना है, जिससे एक सीड प्लांट में ग्रो होता है. तो सबसे पहले क्या सीड को ग्रो होने के लिए पिज्जा चाहिए? नॉट एट ऑल. पिज्जा तो आपको भी नहीं चाहिए, इट्स अ जंक फूड. क्या सीड को ग्रो होने के लिए सनलाइट चाहिए? यस. सनलाइट के बाद उसे वाटर चाहिए. Of course it needs water. Water is essential for everyone. You need water, I need water, plants need water. We cannot live without water. So sunlight, water. फिर उसे क्या बर्गर चाहिए? No. उसे चिप्स चाहिए? Not at all. फिर उसे पहले उसको सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए एंड देन फ्रेश एयर. तो जो सॉइल में सीड है वो ग्रो हो जाएगा एक बड़े प्लांट में. ऑलराइट, वेरी गुड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ टुडे वी हैव डन these 4 important terms. We have learned about trees, which are very big, strong, tall plants. Then we have done climbers. Climbers are weak plants which cannot grow straight on their own, so they need support to grow. Weak plants that need support to stand. Creepers, इतने weak plants जो किसी सपोर्ट से भी स्ट्रेट ग्रो नहीं कर सकते. दैट्स वाई दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड. वीक प्लांट्स दैट क्रीप अलोंग द ग्राउंड. एंड अ सीड from which baby plant grows into a big plant. So plants grow from seeds. All right. So we see many plants around us. Plants are our best friends. Some plants are big and some plants are small. Trees are big and strong plants. Climbers are weak plants and need support to grow. Creepers are also weak plants and they creep along the ground. Air, water, sunlight helps the baby plant to come out and grow. Air, water, sunlight. Very important. Air, water, sunlight. And soil also. So let's do a few exercises. It's a fun exercise. Let's do it. So A, you have to tick the correct answer. So आपको इन options में से option A, B या C में से कोई भी one correct option choose करना है for the answer. So what do you think? This picture is what? Think a big tall plant and it is called, it's a big plant and it is called a tree. So this is a big plant. Now big fruit plant and they grow along the ground. They creep along the ground. So this picture is a creeper. Okay, next, number 3. So there is a support, a stick, and a plant is growing on that support. It is growing, it is climbing on that support. So this picture is a plant and this is a picture of actually a creeper plant.
Let's fill in the blanks. Dash are our best friends. Who are our best friends in this chapter? We have learnt about them. Yes, plants are our best friends. What are big plants called? Correct. Trees are big plants. Climbers need support to grow. A baby plant grows from a... Very good. Awesome. Yes, it grows from a seed. So let's do third question, and you have to write the missing letters in the space provided. So I am giving you 2 minutes to think what are the names of these plants. Okay, first one. Think. Yes. Correct. It's a sunflower. 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 Second one. A tall, strong plant. Correct. It's a coconut plant. A coconut tree. Juicy bunches hanging on the climber plant, and it is grapes. A big fat fruit creeping along the ground, and it's a pumpkin. Very good. I'm so proud of each one of you. Now, these are the questions that you are going to answer in your notebook yourself. You have to define trees, that means what are trees, and give 2 examples of it. I'll quickly discuss the answers of these, and then you can write in your notebook on your own. So, trees are big, tall, strong plants. For example, mango tree, coconut tree, banana tree, banyan tree, neem tree. So I have named so many of them. So you just have to give 2 examples. What do climbers need? Climbers need support to grow. Give 2 examples. Grapevine, money plant. How do creepers grow? Creepers grow along the ground. Give 2 examples. Pumpkin, sweet potato, watermelon. Alright. Now, these are just fun-based activities which you will do on your own with your friends, classmates, parents, and have fun. So that's all for today, my children. I hope you enjoyed this session as much as I did and learned a lot more about plants. So keep learning, keep shining. Bye-bye.